Yeah, I'm looking and reaching, I'm hoping I achieve it. Now I'm chasing these feelings, cause I know they're always leaving. Now I'm running. Hello guys, welcome to TechHood. So our topic for today will be Tinkercad introduction. Like what is Tinkercad? ठीक है यार, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं. So we have come on to our Google page, right? So simply Google करेंगे Tinkercad. Alright. Okay, so we'll go with this first link which was here, right? Tinkercad. Okay, now it's opening. So first of all यार हम ये जानेंगे कि Tinkercad है क्या, right? So अभी हम इसके वेब पेज पे आए हैं. So we can see over here it is written Autodesk Tinkercad. So Autodesk is a software company, right, which provides technical solutions like technical softwares. आपने बहुत नाम सुने होंगे, Fusion 360, Autodesk Inventor. Like अगर नहीं सुने तो these are all designing softwares, right? Similarly ये जो Tinkercad है, this is also one of them, right? So it is used for designing. As you can see यहाँ पे work plane में you can create your own designs and also circuits and coding, right? So in this track इस track में हम आने वाले videos में we'll be making a lot more interesting projects, right? We'll be using sensors and integrating with our Arduino, right, the microcontroller. So बहुत exciting journey होने वाली है. So along with that you can see over here कि first of all हम आज की class में क्या जानेंगे, how to log into our Tinkercad, right, account, because this is a web based software, right? So इसमें जो भी हम काम करेंगे it will all be saved to the cloud, right? आपका PC चाहे जो भी specifications हार्डवेयर के साथ हो, right? इसमें आपको कोई हार्डवेयर strong हार्डवेयर requirements नहीं है. So it is easy to use, right, convenient. So that is why we have taken it as our first step towards this, and आप यहाँ पे देख सकते हैं यार, from mind to design in minutes. So it's true that ये minutes का ही खेल है, and I will help you throughout this journey कि हम interesting designs, as you can see over here on the right, cars and all that. So कैसे design करना है, circuits and all that, will be going through all of this, right? So first of all login करने के लिए as you can see there is this sign in, join now. So we'll go to sign in. So over here you can see it is we have students join your class through email, username, sign in with Google, with Apple. So आपको जो भी तरीका आपको जो आसान लगे, जैसे I have already logged in, so I have used email or username. जैसे आपने Facebook, Instagram का अकाउंट बनाते हो, similarly इसका भी यार simple अकाउंट है, simple go through है, right? You can go with sign in with Google, it's much more easy. So I have gone with email, and over here I have my already logged in, so I have my details over there already. So just by signing in I have come on to this home page. So it is loading over here, and यार ये सॉफ्टवेयर बहुत ईजी है सीखने के लिए. So it adds as an extra skill to you. So देखो यार हम लोग आ चुके हैं, alright, on this home page. So यार आप यहाँ पे देख सकते होगे कि on the left side we have on this bar there are written 3D design, circuits, code blocks, lessons. So हम एक एक करके हर एक चीज़ को देखेंगे. And over here on the left there is branding of Autodesk Tinkercad. Over here you will see your profile name. Also you can put your own picture. I have मतलब मैंने तो अभी नहीं लगाई है, but आप लोग लगा सकते हो. And there are different things, but for today we'll be focusing on circuits. Alright, so in the circuits as you can see there is written create new circuit. वैसे तो मैंने बहुत सारे सर्किट्स पहले से ही बना रखे हैं, बट फॉर टुडे विल बी फोकसिंग ऑन अ बेसिक वन. बट उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम प्रोसीड कैसे करेंगे, क्योंकि व्हेन यू विल बी लॉगिंग इन फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आपके पास यहाँ पे ये कोई सर्किट नहीं होगा, राइट? सो विल गो टू द क्रिएट न्यू सर्किट. ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ सेंटर में एक ब्लैंक स्पेस होगा. दिस इज विल बी योर वर्क प्लेस, राइट?
फर्स्ट थिंग जो सबसे अट्रैक्टिव लगती है वो ये राइट साइड वाला बार है, राइट। सो इसको हम हटा भी सकते हैं एंड वी कैन टेक इट आउट। सो ओवर हेयर वी हैव द कंपोनेंट बार, राइट। हमारे जो भी कंपोनेंट्स होते हैं सर्किट्स के लिए, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, रजिस्टर, एलईडी, एनीथिंग यू वांट टू सर्च, राइट। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं जैसे बैटरी। So I just search battery and it automatically gives me some options. So I go with the battery one, and as you can see it has some already featured components of electronics. So as you can see over here, components basic, so there are all. So in all other components also get added up, and sensors and all that. Also over here you can see this three icon lines. So if we go over here it will show us like हमें हर component का use क्या है, application क्या है. So like we know what is a resistor, right? It restricts the flow of electricity. So basically it will help us to actually know or define what are the different components in the circuit. All right. Now we'll go over here on the left side. So you can see there is a written terrific gojo bojo. So basically this is the project name, so we can change it to our lesson 1, right? So over here you can see now it is lesson 1. Okay, on this left side यार यहाँ पे आप देख सकते हो this is rotate, right? So जो भी हम circuit use कर रहे हैं, let's say I have dragged a resistor, right? So अब मैं जब इसको select किया हुआ है, so I can over here rotate it, right? So it rotates at an angle of 30 degree. So every click it rotates for 30 degree. All right. And also जब भी कोई component आप select करोगे, there will be a box that will be opening up. So there are different options for different components. So like there is name, so I can give this resistance any name, right? मैं इसे कुछ भी name कर सकता हूँ, right? Let's say मैंने इसको कर दिया R1, okay, R1, ठीक है। एंड इसकी मैं वैल्यू भी सेट कर सकता हूँ। नाउ मैं आपको इसको फोकस करके दिखाता हूँ। सो यू मस्ट बी नोइंग इन बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक हाउ वी गेट टू नो द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। हमें वैल्यू कैसे पता लगती है? इट्स बाय रीडिंग दीज बैंड्स लाइक ब्राउन, ब्लैक, रेड एंड देन दिस गोल्डन स्ट्रिप। सो हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। लाइक आई डोंट वांट 1 किलो ओम, I just want, let's say मैं 1 ohm ही चाहता हूँ, right? We can change the units also. So 1 ohm. So over here you can see the color change to gray, right? So similarly हम इसमें बहुत changes कर सकते हैं. So it's not like that आपको हर एक value के लिए resistor drag करना है. It's just that you select the resistor and put your own value, right? So that is very much interesting. Also हम इस component को किसी को भी delete करना है. So we just tap on it and we delete it. All right. Then these two options are undo and redo. So undo kiya, so I have just got this, and there is a shortcut also mentioned over here, control plus Z for that. All right, and control plus Y for redo. Also like when we will be creating circuits ना, so आपके मन में ख्याल होगा like if मैंने कोई circuit बनाया, right? And I have to explain what is happening in that circuit, right? या किसी part of the circuit में क्या चल रहा है. So I can add a note, right? So over here you can see there is a note. So what I will do, I will drag it here. Let's say I can add my text. This is resistance, right? So हमें किसी को भी बताने के लिए कि what is happening, like right now I am explaining it to you. But if I have to make this circuit self-explanatory, then I will have to use these nodes, and also we can hide it so that it doesn't affect the aesthetic of our circuit, right? So when we want to see it, we just take this I button, right? And it has its own shortcut also, that is shift plus N, right? But use करना क्या है यार, जब सामने you just have your mouse, so you can just drag and play. Also we have this color toggle, right? So when we'll open this will show us the wire color. So you must be knowing यार हमें wire color की क्यों ज़रूरत पड़ती है कोई भी चीज़ जैसे डिनोट करने के लिए, like
ग्राउंड वायर जा रही है तो हम उसे ब्लैक से ही डिनोट करते हैं, कोई पॉजिटिव वायर जा रही है हम पॉजिटिव के लिए रेड यूज़ करते हैं। ऐसे ही हम डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हैं टू मेक आवर सर्किट मोर कन्वीनियंट, राइट। हमें देखने में लगे कि हाँ इट इज़ जैसे हमें 10 वायर्स यूज़ करनी है एंड दे आर जस्ट गेटिंग ओवरलैप्ड, सो हमें कन्फ्यूजन ना फॉर दैट, एंड in upcoming circuits we will see how it is helpful, right. Now over on this right side you can see this wire type, right. So in wire type you can see normal, hookup, alligator, automatic. So we'll see how these look. मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा अभी। एंड बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आपने यूज़ करी होंगी लाइक एलिगेटर वन। सो नॉर्मल तो जो आपने देखी है नॉर्मल वायर्स, एंड इफ़ गाइस अगर आपको ज़रूरत हो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स में ये जो बेसिक कंपोनेंट्स है, राइट, इनकी फंक्शनिंग ये क्या करते हैं, अगर आपको इसके लिए भी नॉलेज चाहिए सो डू कमेंट in the comment section and we will definitely come with a track of that. So यार हम ये बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में हम सारे कंपोनेंट्स, सारी हर चीज़ एकदम अच्छे से स्टडी कर लेंगे, जिससे आपको ये दिक्कत ना हो कि हम मतलब हम सर्किट्स तो बना रहे हैं बट हमें यही नहीं पता कि कंपोनेंट्स का इंडिविजुअल यूज़ क्या है, कैसे एप्लीकेशन उसकी होती है, राइट, इन द इंडस्ट्री। सो हम उसके बारे में उसमें डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ वी आर जस्ट स्टिकिंग टू द टिंकरकैड सॉफ्टवेयर। सो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ही था ऑल्सो डू लाइक दिस, एंड ऑन द राइट साइड आप यार यहाँ पे देख सकते हैं ऑल चेंजेस सेव। सो व्हाट डज दिस मीन? So as I have already told you that this is a web based software, right? So इसमें जो भी चीज़ सेव होगी, आपका जो भी प्रोजेक्ट, जो भी मेमोरी होगी, वो सारा वेब पे ऑन क्लाउड स्टोरेज जाएगा। सो आपका कोई भी हार्डवेयर यूज़ नहीं होगा, नॉट योर मेमोरी, योर मेमोरी विल बी यूज। सो दिस इज़ अ कूल पॉइंट, राइट। एंड देन देयर इज़ अ कोड ओवर हियर। सो बेसिकली वी अपलोड आवर कोड। सो जब मैंने इस पर टैप किया तो आप देख सकते हैं नो प्रोग्रामेबल कंपोनेंट इन दिस सर्किट। सो बेसिकली हमने कोई एक माइक्रो कंट्रोलर यूज़ नहीं किया एज अ कंपोनेंट, सो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट अपलोडिंग। सो जब हम अपना नेक्स्ट वीडियो में बेसिक ब्लिंकिंग एंड एलईडी सर्किट बनाएंगे, सो वी विल सी ओवर देयर हाउ वी आर गोइंग टू प्रोग्राम इट। एंड देन देयर इज़ अ स्टार्ट सिमुलेशन। सो आपको इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ सिमुलेशन, सो बेसिकली एक हम एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं वेयर we test our circuits or any of the things virtually. So हम virtually try and test करते हैं कि how is our circuit working, हमारा circuit कैसा चल रहा है, because these things are very much expensive sometimes, right? Electronic items are very much expensive as you all know. So अगर if we are testing it physically, so क्या होगा कि if we do any silly mistake like लेट से हमने कोई इनपुट आउटपुट की वायरी चेंज कर दी, सो हो सकता है उससे हमारे महंगे कंपोनेंट्स डिस्ट्रॉय हो जाए, राइट, हीट अप होके। सो वो हम नहीं चाहेंगे। सो फॉर दैट पर्पस वी यूज़ दिस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स एंड हेंस वी विल यूज़ दिस सिमुलेशन बार टू चेक आवर सर्किटरी इफ इट्स राइट और रॉन्ग, राइट। सो इसका भी यूज़ करेंगे। एंड देन देयर आर एक्सपोर्ट एंड शेयर ऑप्शंस। So it is basically used for sharing our projects, so I will show you. And then yeah, that's pretty much it for the first video, and then I will see you next time in the next video. Till then, peace out. See you again.